Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back, my dear students. Welcome to the another lecture, the part 2 of chapter 1. Okay, so we have already completed with the part 1 of chapter 1, that is exception handling in Python. So in this lecture, we'll be seeing about the part 2. Okay, so before getting into the part 2, we have discussed about introduction, about syntax errors, about exceptions, about built-in exceptions, and for your syllabus we have 12 built-in exceptions and we have seen all of them in detail. Okay, we have all written one example and we have executed them. Okay, hope you have noted down all the points. So having that context in mind, so I recommend you, before watching this lecture, if you haven't watched the part 1, please go, because I've covered all the basics understanding and the real world example in part 1. Okay, so don't directly jump into part 2. I would suggest first you go to the part 1, come in a serial order. Okay, you first complete the part 1. If you have completed the part 1, you can watch part 2. Having said that, let's get started. Okay, so in this lecture or in this class, we will be seeing about raising exceptions, handling exceptions, and the finally clause. Okay, so first of all, coming to the raising exceptions, we have two statements under that. Okay, one is raise statement, another one is assert statement. As you can see, there is a raise statement and there is a assert statement. Okay, so before that, what is raising an exception? ठीक है भाई, एक्सेप्शन हमको पता है, बिल्ट इन एक्सेप्शन हमको पता है, अभी रेजिंग एक्सेप्शन क्या है? इट इज very easy. Okay, I will tell you the definition. Please note down the definition. Okay, you have to always note down the definitions, you have to always note down the examples and the syntax. Okay, in order to have the clear understanding about the topic. Okay, so what is a raising exceptions? Okay, raising an exceptions means manually creating an error in your program. Okay, when you know something is going wrong or something is invalid. अरे बेटा बात समझ में, आपके हिसाब से प्रोग्राम के अंदर अपने आप, यानी प्रोग्राम चाहते हुए, मतलब प्रोग्रामर चाहते हुए जो एरर प्रोड्यूस करता है प्रोग्राम में, इज नोन एज रेजिंग एन एक्सेप्शन. Still not clear? Okay, it means you manually create the error in the program. आप प्रोग्राम लिखेंगे, कुछ कंडीशन चेक करेंगे, भाई अगर ये कंडीशन सही है तो ठीक है, अगर ये कंडीशन कहीं गड़बड़ आ रहा है तो मैं खुद एक्सेप्शन रेज करूंगा. दैट इज कॉल्ड एज रेजिंग एन एक्सेप्शन. अगेन, we'll take the example in order to better understand it. Okay, imagine, again we'll take our good old example of ATM. Okay, that is a very good example I can give. Imagine you're withdrawing money from an ATM. If you try to withdraw more money than your account balance, the ATM says insufficient balance. Okay, this is like raising an exception to stop the process and show the error. अरे बेटा बात समझ में? तो आपका एटीएम मशीन एक्सेप्शन रेज कर रहा है. He is raising an exception. That machine is raising an exception. It is raising some kind of complaint to show to the user that you are trying to withdraw some amount which is very larger than the balance you have in your account. Understood? That is called as raising an exception. Understood? Example we clear hai? Now, under hood we have two statements, that is raise statement as well as assert statement. Okay, now first of all we will see what is raise statement and then we will see what is assert statement. Okay, and again these are the two keywords, or these are the two statements used to raise an exception. You will use the raise keyword to raise an exception. You will also use assert statement to raise an exception. Understood, guys? Let's see what is raise statement first. Okay, okay, first of all we'll see what is a raise exception, oh sorry, raise statement, or raising an exception using raise statement. Okay, so what is the definition? Again, note down the definition. The raise statement is used to create, or trigger an exception manually in Python. The word manually is very important. Okay, please underline the word manually. The raise statement is used to create
or trigger an exception manually in Python. Okay, manually यानी आप अपने हाथ से जब error create कर रहे हैं, that is called as raising an exception. Understood? एक real world example लेंगे. Okay, imagine your teacher, I mean me. Okay, if a student doesn't bring a notebook to the class, I will raise a complaint. आ रही बात समझ में? Okay, मैं जब क्लास में आऊंगा and I see some student has not bought the notebook, CS notebook. What I will do? I will raise a complaint to the chairman. Understood? मैं complaint raise करूंगा. That is called as why I will raise the complaint. चुपके चुपके मैं raise करूंगा complaint? नहीं. When something goes wrong, then I will raise the complaint. In the same way, when something goes wrong in your Python, you raise an exception. That is called as raising a exception using the raise statement. Having understood that, we will see its syntax. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका syntax देखेंगे. What is the syntax of raise statement? Okay, so this is a syntax to raise an exception. Okay, what is the syntax? I literally have a keyword called as raise, R-A-I-S-E, raise, and then what is the exception you want to raise? You will give the exception name. Okay, again we have seen the many built-in exceptions. You can use any one of the exception over here. Okay, and in brackets you should give some optional arguments, maybe some kind of error message. Understood? That is how we raise an exception. Now we will see an example. ठीक है, हम Python idle open करके एक actually example देखेंगे. You should always note down the definition, syntax as well as the example in your explanation notebook. That is compulsory. Okay guys, I am on my idle software. Okay, now we will see how do we raise an exception. Okay, what is the syntax? R-A-I-S-E, raise. You see the color changed. Okay, so that is the keyword we will use to raise an exception. Now I will literally create a default exception. Okay, I'll just say exception. This is exception. You see the change, it changes the color. Okay, it means you are writing the correct syntax. Understood? Again, I will open a bracket, close a bracket, inside in double quotes. In double quotes, I will give some kind of error message. Hello, this is my first exception. This is my first exception. Okay, so what you are doing, you are manually raising an exception. Understood? Let's hit enter and try. You see, we got the exception. Okay, you see at the fourth line it says exception. Hello, this is my first exception. This is how you create the exception. ठीक है, मेरे प्रोग्राम का सिंटैक्स करेक्ट है, बट एक्सेप्शन कहां से आया? क्योंकि मैं खुद एक्सेप्शन यहां पे क्रिएट कर रहा हूं. That's why I got the exception. ಈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇಕಂತ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ. Understood? Now what I will do is I will create a new file and actually write a 3 to 4 lines of a program how a ATM raises an exception. This is interesting, right? हमने एग्जांपल देखा कि भाई ATM में एक्सेप्शन कैसे आता है. Now we will actually code it. Okay, we are programmers. We need to understand concepts using the program. Okay, चलो भाई हम आज ATM का प्रोग्राम लिखेंगे. Okay, we are really great. Okay guys, so I am on my idle file. Okay, Python ka file. Okay, here I will be writing my program. What is the program? I will write a program how ATM checks for the insufficient balance. ठीक है, लिखेंगे प्रोग्राम. चलो, I will write along with you. Okay, or you should write the program along with me. Now I'll have a variable balance is equals to, मान लो मेरे अकाउंट में I have 10,000 balance. Okay, hit enter. Now I will ask the user, enter the amount you want to withdraw. Okay, amount is equals to, I will ask the user, okay, int of input, in double quotes I will ask enter the amount you want to withdraw. Okay, मैं यूजर को पूछ रहा हूं कि भाई आप कितना अमाउंट विड्रॉ करना चाह रहे हैं. नाउ आई विल हैव अ कंडीशन. ओके, इफ amount
if amount is greater than the balance, ठीक है भाई, अगर withdrawing amount is greater than your balance, is that possible? क्या आप अपने अकाउंट में से जितने पैसे हैं उससे ज्यादा विड्रॉ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. So that is the condition I have. If your amount requesting to the ATM is greater than the balance you have in your ATM, then that is the point where we need to manually raise an exception. Understood? I'll have a colon, and what is the syntax to raise an exception? RAISE, raise, and I will say value error. This is the exception we have already studied in the built-in exceptions. Okay, then I will have a bracket open and close, and I will give insufficient balance. Okay, insufficient balance, insufficient balance. ठीक है, अगर नहीं, ओके, अगर मेरे पास बैलेंस है तो मैं क्या करूंगा, जस्ट से प्रिंट what I will say, please collect the cash. What is the cash? Amount. Okay, I should have a comma and amount. Understood? Guys, let's try this program. Okay, I will save it and I'll go to run. Click on run. Let's see. Yeah, okay. Looks like there are no syntax errors. Okay. अभी गाइज मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना है? 10,000. I have 10,000 in my account. Okay, what I will do, I will try to withdraw 5,000. Is this valid? ठीक है, मेरे अकाउंट में 10,000 है, मैं 5,000 विड्रॉ कर रहा हूं. Okay, let's try to see. Hit enter. It says please collect the cash 5,000. ठीक है, 5,000 मैंने विड्रॉ कर लिया. Understood? Now again I will try to run this program. एक और बार रन करेंगे. Okay, run module. Again recall what is the balance I have in my account? 10,000. Okay, ठीक है, मैंने 5,000 विड्रॉ किया है, बट सिंस आई एम रीरनिंग द प्रोग्राम, फिर से मेरा बैलेंस क्या हो गया? 10,000 हो गया. ओके, व्हाट इज द बैलेंस आई हैव इन माय अकाउंट? 10,000. I will try to withdraw 12,000 from my account. Okay, let's see what happens in this case. I will hit enter. See, it gives me the value error, the value error exception to be precise. Understood? समझ में आ रही बात? यहाँ पे मुझे एक्सेप्शन आ गया और मेरा प्रोग्राम क्रैश हो गया. सी, insufficient balance because I am manually creating an exception. I am manually raising an exception. Why? Because there is a problem. What is the problem? I am trying to withdraw the amount which is significantly larger or which is literally larger than the balance I have in my account. Understood, guys? So this is a very good example of raising an exception using the raise statement. Hope this is clear. So guys, let us see assert statement now. Okay, because we raise an exception using two methods, that is raise using the raise statement and as well as using the assert statement. Got it, guys? So now what I will do is I will tell you the definition. You have to note it down, the definition first. Got it? Okay. The assert statement is used to check if a condition is true. Understood, guys? Pay attention. The assert statement is used to check if a condition is true. Okay. If not, if the condition is not true, it means if the condition is false, then it raises an assertion error. ठीक है? एक और हमारे पास built in exception है, that is called as assertion error. Got it? ठीक है. एक और हम लोग क्या करेंगे, रियल वर्ल्ड एग्जांपल से हम लोग समझेंगे बिफोर गोइंग टू द सिंटैक्स. अंडरस्टूड? ओके. इमेजिन योर मोबाइल सेज 100% बैटरी. ठीक है, आपके मोबाइल में 100% बैटरी चार्ज हो गई है, बट व्हेन यू रिमूव द चार्जर इट शट डाउन्स. आ रही बेटा बात समझ में? जब आप चार्जर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका फोन बंद हो जाएगा. दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग. आ रही बात समझ में? आइडियली क्या होना चाहिए भाई, फोन में 100% चार्जिंग दिखा रहा है, जब मैं चार्जर पिन निकाल दूंगा फोन से तो फोन चलना चाहिए ना, बट इन माय केस मेरा फोन बंद हो रहा है, देन समथिंग इज गोइंग रॉन्ग हियर. ओके, सो यू कैन यूज assert to check
such conditions in your program कि भाई किस लिए मेरा फोन बंद हो रहा है। अरे बेटा बात समझ में? ओके, आइडियल केस क्या है कि भाई हाँ, फोन से जब मैं चार्ज निकाल दिया तो फोन चलना चाहिए क्योंकि 100% चार्जिंग है। ओके, बट हो क्या रहा है, योर फोन इज सडनली शटिंग डाउन, फोन सडनली स्विच ऑफ हो रहा है। क्यों स्विच ऑफ हो रहा है, ये आप सोचेंगे ना, इस सोचने को या कुछ ट्राई करेंगे, क्या भाई बैटरी खराब हो गया, क्या बैटरी फूक गया, क्या, यू सी ऑल दोस थिंग्स। दिस इज कॉल्ड एज असर्शन। असर्शन इन अनदर वर्ड्स लिटरली चेकिंग द कंडीशन। अंडरस्टूड? असर्ट का मतलब क्या है कि कंडीशन को चेक करना, दैट इज असर्ट। अंडरस्टूड? ओके, now we will see what is the syntax of the assert statement. Okay guys, so this is the syntax for assert statement. What is the syntax? It's pretty simple. यहाँ पे जैसे raise था, here we have assert. Okay, assert, then here you used to have a expression, sorry, exception name. Here you will have expression, it means it is a condition. समझ में आ रही बात? Assert some condition and you will have some arguments. Okay, maybe the print statement and all. आ रही बेटा बात समझ में? That is exactly a assert statement. ठीक है, you check, what you will check, you will assert, you will check the condition, that's all. Assert का मतलब क्या है, condition को check करना. Understood? Okay, then you will try to raise an exception if the condition is false. ठीक है, now again we will see the same thing using an example. ठीक है, everything we should do it using an example. Example जो देखेंगे समझ में आएगा। हरी बात समझ में? Okay, now what I will do is I will again go to the same program. Okay, I'll go to the same program and modify the same program using assert statement. हरी बात समझ में? I will do the same thing but using the assert statement. How do we do? Okay, I'll just get rid of this entire statement. Okay, I'll just copy this one. Okay, I'll just remove this entire thing. Now what I will do, I'll just have assert. Okay, now what is the condition? What is the condition? The condition is, okay, let's have amount is greater than balance. Okay, if amount is greater than balance, what I should do, I should simply throw an assertion error. खत्म, इतना ही। वहां पे मैं मैन्युअली इफ कंडीशन यूज करके आई वाज रेजिंग एन एक्सेप्शन. Instead of that, you have another method. You can also raise an exception using assert. Okay, what is assert? Assert means checking. What you are checking? You're checking if amount is greater than balance. अगर ये true हो गया, okay, अगर ये true हो गया, then, oh sorry, if amount is greater than balance. Okay, let's try to understand this first. Okay, actually there is kind of a logical error here. Okay, see how, what is assert? I told in the definition, assert checks the condition if this is true. If this is true, then it will not give you an error, it will not display any error. But when this condition is false, when this condition is false, then what happens, it will give you an error. Okay, in this case this should be less than. Understood? Okay, if amount is less than balance, ठीक है, जो amount of withdraw करना चाह रहे हैं अपने balance से कम है, then you will get the cash. Or else if this condition is false, then you will get this error. Okay, that's what you have to understand. That's how the assert is built in the Python, guys. Okay, if the condition is true, it will just execute with the flow. If the condition is false, then it will trigger the exception. Got it? Let's save this and let's try to run our module. Okay, ठीक है, run करेंगे. मेरे पास balance कितना है? I have 10,000. I will try to withdraw 2,000. It should give me the cash. Yes, it has given me the cash. Okay, now I will close, run the program once again. Okay, now what is my balance? Now my balance is again 10,000. I will try to withdraw 20,000. Is it possible? No, because the amount you are trying to withdraw is larger than the value you have or the balance you have in your account. Now I will hit enter. It will give you an assertion error. Got it? Okay.
assertion error, because I've used the assert statement. That's why you will get an assertion error. Got it? And we have the error message as insufficient balance. Got it, guys? देखो, same program we can write it in two ways. Okay, आप क्या करेंगे अपने notes में? You will take the previous example for the raise statement and you will take down this example for the assert statement. Hope this is clear, guys. Understood? But एक चीज याद रखना है, assert कब exception raise करेगा? जब ये condition false होगा. आ रही बात समझ में? जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तब ये प्रिंट होगा आपके पास. ओके, जब ये कंडीशन ट्रू होगा देन यू विल प्रोसीड विद द फर्दर एग्जीक्यूशन. गॉट इट गाइस? ओके, नाउ वी आर टेक्निकली एंड थियोरेटिकली वी आर डन विद द रेजिंग एक्सेप्शंस. इतना ही है गाइस इन रेजिंग एक्सेप्शन. दैट्स ऑल वी हैव, राइट? ओके, so we are done with raising and exceptions. ठीक है, मैंने टिक मार्क डाल दिया है. We are done with the raising exception. What we have learned in the raising exceptions? We have learned what is raising an exception. Okay, exception raise करने का मतलब क्या है? We have seen a real world example and we have seen the two types. What are the types? Raise statement and assert statement. And we have also seen the definition for raise statement. We have seen the syntax and we have seen the example. And we have also seen the what is assert statement, definition of assert, and the syntax and example of assert statement. Hope raising an exception is clear, guys. Okay, now moving on, we have handling an exception. ठीक है, नया topic, very interesting topic, guys. Okay, what do you mean by handling an exception? आ रही बात समझ में? Exception handle करने को किसे कहते हैं? See, what is an exception? Exception is an unexpected problem occurred during some process. ठीक है, यहां पर मैं क्या करूंगा, एक बेहतरीन रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूंगा गाइस. अगेन आई वांट टू गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल. ठीक है, हैंडलिंग एन एक्सेप्शन. ठीक है, मतलब उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को आप हैंडल कैसे करेंगे, दैट इज एग्जैक्टली हैंडलिंग एन एक्सेप्शन. मान लो यू आर ट्रैवलिंग इन ए कार. ठीक है, आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं. व्हाट इज द हैप्पी पाथ, व्हाट इज द आइडियल वे? आप कार में जा रहे हैं, आप अपने डेस्टिनेशन को आराम से पहुंचना है. दैट इज द हैप्पी पाथ, दैट इज द सक्सेस कंडीशन. समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंस ड्यूरिंग योर जर्नी. व्हाट इज दैट? लेट्स टेक एन एग्जांपल. आपके कार का टायर पंचर हो जाएगा. ओके, दैट इज एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम व्हिच हैज हैपेंड. सो व्हाट यू विल डू? यू विल थ्रो योर कार. आप अपनी कार फेंक देंगे, बोल देंगे कि भाई ये कार का टायर पंचर हो गया, मुझे नहीं चाहिए कार. Will you do like that? No. Instead, you will handle that situation. How you will handle? You will change the tire. अक्लमंद यही करेगा ना. कोई पागल होगा अपनी कार फेंक देगा. अक्लमंद क्या करेगा? भाई कार का टायर ही तो पंचर हुआ है, we'll change the tire. That is exactly handling an exception. भाई प्रोग्राम में एरर तो आया है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे प्रोग्राम को क्रैश करके फेंक देना है. नहीं, you will instead accommodate or consume that error. You will consume the situation. आप सिचुएशन को समझेंगे कि भाई हाँ, प्रोग्राम में क्या गलत हुआ है, क्या एरर हुआ है. ठीक है, इसको क्रैश करने के बजाय इसको हैंडल करेंगे. यू हैंडल द सिचुएशन, यू हैंडल द प्रॉब्लम इन ए पॉजिटिव वे. दैट इज एग्जैक्टली हैंडलिंग एन एक्सेप्शन. अंडरस्टूड? नोट डाउन द डेफिनेशन, okay, for handling an exception. Are you guys ready? Shall I tell the handling exceptions definition? Note down. Handling exception means using code to catch and deal with the error. ठीक है, प्रोग्राम में एरर आया, आप उस एरर को पकड़ेंगे, उसको मान लेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे एंड उससे आप डील करेंगे, यानी उसको फिक्स करेंगे विद द एरर, सो द प्रोग्राम डजंट क्रैश. अंडरस्टूड? नोट डाउन द डेफिनेशन. Handling exception means using code to catch and deal with error so the program doesn't crash. अरे बेटा बात समझ में? आप सिचुएशन को कंज्यूम करेंगे और उस सिचुएशन में जो एरर आया है, यानी जो प्रॉब्लम आया, उस प्रॉब्लम से आप डील करेंगे. दैट इज एग्जैक्टली हैंडलिंग एन एक्सेप्शन. If you want one more example, I can give you one more example. Okay, imagine you are cooking. Okay, you are cooking and the gas stove suddenly goes off. What you will do? Instead of डर जाएंगे, भाई मैं खाना पका रही थी, गैस बंद हो गया, डर जाएंगे? नहीं. What you will do? You will just turn off your electric switch.
आ रही बात समझ में? कंसिडरिंग आपके पास जो चूल्हा है वो करंट का है, वो इलेक्ट्रिक का है, इलेक्ट्रिक का चूल्हा है, आप उसके ऊपर कुछ चावल चढ़ाए, ओके, चावल पक रहा है एंड सडनली टर्न्स ऑफ, ठीक है, सडनली बंद हो जाएगा, आप डर जाएंगे क्या? इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग व्हाट you'll do, you'll just switch off the electric stove, ओके, उस सिचुएशन को आप हैंडल करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे? यू आर जस्ट स्विचिंग ऑफ द स्टोव, दैट इज एग्जैक्टली हैंडलिंग एन एक्सेप्शन. Understood, guys? I hope you understood it. Now, in handling an exception, we have four types. Okay, I'll just zoom in a bit so that you guys can note down. In handling exception, we have four subtopics. What are those? First one is need for exception handling. क्यों exception handling चाहिए? Next one is process of handling exception. उसका तरीक़ेकार क्या है exception handle करने का? Then catching the exceptions. आप कैसे catch करेंगे exception को? And then there is a terminology called as try, except, else and clause. Okay, else clause. Okay, that we will see with the syntax as well as an example. सबसे पहले we will see why do you need for an exception handling. So guys, what is the need for exception handling? क्यों चाहिए exception handling? Oops, I have a typo, I have a spelling mistake, I'm really sorry for that. I shouldn't have e there. Got it. Okay, what is the need for exception handling, guys? Again, I'm telling the definition, please note down. To prevent the program from crashing unexpectedly and to handle the errors in a beautiful manner. यही मकसद है ना भाई, एक्सेप्शन आया है मेरे प्रोग्राम में, इंस्टेड ऑफ मेरे प्रोग्राम, मेरा पूरा एप्लीकेशन क्रैश होने से बचाने के लिए मैं क्या करूंगा, उस एक्सेप्शन को हैंडल करूंगा. ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, अगेन द एग्जांपल ऑफ कार. ओके, यू आर ट्रैवलिंग इन ए कार, आपके कार का टायर पंचर हो गया है, आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में? ओके, अक्लमंद क्या करेगा, यू जस्ट चेंज द टायर, जो स्टेपनी आपके पास जो स्पेयर टायर होगा उससे आप कार का टायर चेंज करेंगे एंड यू विल कंटिन्यू, ओके, इन अ पीसफुल मैनर. दैट इज व्हाई वी नीड एन एक्सेप्शन हैंडलिंग. अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग जैसा कॉन्सेप्ट नहीं रहता हमारे पास तो क्या करेंगे? मान लो कोई पागल है, कार चला रहा है, ओके, कार पंचर हो गया, वो कार फेंक देगा. इज दैट ए आइडियल केस? पूरी कार फेंक देना अच्छी बात है? नहीं. ओके, सो वी हैव टू हैंडल दैट सिचुएशन, दैट्स व्हाई वी नीड टू handle the exception. Understood? Okay, the definition is to prevent the program from crashing unexpectedly and to handle the error in a beautiful manner. That is the need for exception handling. Got it, guys? Okay, that is about your need for exception handling. Okay, now, that is just theoretical. Okay, exception handling क्यों चाहिए? Okay, that is just theory. Okay, if they ask this question for need for exception handling, you can explain what is the need for exception handling by giving the definition, and you can literally explain the example of the car. Got it, guys? Okay, now let's go for the second topic. Yeah, this is the second topic under exception handling, that is process of handling exception. ठीक है, हाँ भाई, एक्सेप्शन तो आ गया है, उसे क्यों हैंडल करना, मकसद क्या है, वो भी हमने देख लिया है. नाउ वी विल सी व्हाट इज द प्रोसेस, क्या तरीका है एक्सेप्शन को हैंडल करने का. ओके, व्हाट इज द तरीकेकार ऑफ हैंडलिंग द एक्सेप्शन. ओके, सो वी हैव फोर टाइप्स ऑफ व्हाट वी कॉल प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग द एक्सेप्शन. ओके, ये प्रोसेस के अंदर 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. ओके, देयर आर 4 स्टेप्स which are involved in the process of handling an exception. Okay, what are those? Let me just write it down for you guys. Okay, I'll just change the color, I'll just take pink. Okay, I will just write down what are the processes. Okay, first process is try, just try. Okay, then there is something called as accept. Okay, then another one is else. Okay, then the last one we have is finally. Okay, now I will in detail explain you what is this process. A process क्या है? Okay, see, process of handling exception के अंदर we have the this process, whatever the process you have. Okay, this process includes these following 4 steps. Okay, that includes try, accept, else and finally. Now I will explain you what is this try, what is this accept, what is this else and what is this finally.
गाइस, इस सिनेरियो को समझने के लिए अगेन आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ योर कार. ठीक है, सबसे पहले आई विल टेल यू व्हाट आर दीज डेफिनेशंस. इसके डेफिनेशंस क्या है, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन. ओके, ट्राई. व्हाट डू मीन बाय ट्राई? ट्राई सम कोड दैट मे कॉज एन एरर. कुछ ट्राई ऐसा करो कि जिसमें एरर आ सकता है या नहीं भी आ सकता है. यू जस्ट ट्राई. अंडरस्टूड? देन कैच द एरर यूजिंग एक्सेप्ट. अगर ऊपर जो कोड आपने ट्राई किया है एग्जीक्यूट करने का, अगर उसमें कुछ एरर आया, यू एक्सेप्ट इट. यू डोंट रिजेक्ट इट, यू एक्सेप्ट इट. ओके, एल्स. एल्स कहां पे आएगा? ऑप्शनली रनिंग सम कोड इफ नो एरर. अरे बात समझ में? ऊपर जो आपने ट्राई किया है कोड को, अगर उसमें कुछ एरर आया, यू विल कंज्यूम दैट एरर यूजिंग एक्सेप्ट. अगर एरर नहीं आया, व्हाट इज दैट? यू विल गो टू द एल्स पार्ट. भाई एरर नहीं आया, जस्ट लीव इट. ओके, देन फाइनली भाई एरर आए या ना आए, फाइनली मैं यह काम करूंगा. अंडरस्टूड? विल टेक एन एग्जांपल ऑफ योर कार. ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग? कार का एग्जांपल लेंगे. ओके, ट्राई. व्हाट यू विल ट्राई? आई विल ट्राई टू ड्राइव माई कार. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? मेरी कार मैं ड्राइव करूंगा. ओके, जब कार ड्राइव करते समय या तो कुछ फॉल्ट आ सकता है या आप अपने डेस्टिनेशन को सेफली पहुंच सकते हैं. दैट इज द कंडीशन. ओके, यू ट्राई ड्राइविंग योर कार. मान लो व्हाइल यू go driving your car, when you try driving your car, there might a situation occur where your car is punctured. Okay, आपका कार क्या हो जाएगा? पंचर हो जाएगा. Okay, that is the case. If car punctures, what you will do? You should accept this situation. Okay, आप कार ड्राइव करने का ट्राई कर रहे हैं. अगर आपकी कार पंचर हो गई तो आप क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे कंडीशन को. ओके, उस सिचुएशन को आप एक्सेप्ट करेंगे. अगर आपकी कार पंचर नहीं हुई, ओके, नो पंचर. आ रही बात समझ में? ओके, आप कार ड्राइव कर रहे हैं. देयर आर टू केसेस. सॉरी, आई जस्ट टेक द एरो मार्क. देयर आर टू केसेस. वन इज दिस वन एंड अनदर वन इज दिस वन. आ रही बात समझ में? यू ट्राई ड्राइविंग द कार. अगर कार पंचर हो गई, यू जस्ट एक्सेप्ट द सिचुएशन. एक्सेप्ट. समझ में आ रही बात? ओके, यहां पे एक्सेप्ट नहीं है, एक्सेप्ट है. ओके, एक्सेप्ट क्या करेंगे आप? एक्सेप्ट से जो भी एरर आया, यू कंज्यूम इट. ओके, दैट इज अ पाइथन कीवर्ड कॉल्ड एज एक्सेप्ट. ओके, अगर पंक्चर नहीं हुई है, एल्स. इफ देयर इज नो पंक्चर, यू गो टू द एल्स पार्ट. अगर पंक्चर नहीं हुई है, एल्स क्या करेंगे आप? यू जस्ट कंटिन्यू ड्राइविंग योर कार. ओके, अंडरस्टूड? ओके, फाइनली आप क्या करेंगे? भाई अगर कार पंचर हो गई तो टायर चेंज कर लेंगे. अगर कार पंचर नहीं हुई तो क्या करेंगे? आप अपने घर जाएंगे. यहां पर फाइनली कंडीशन क्या है? वेदर देयर इज एन एरर इन योर कोड और वेदर देयर इज नो एरर इन योर कोड, दिस फाइनली ब्लॉक विल एग्जीक्यूट ऑल द टाइम. अरे बेटा बात समझ में? ठीक है, यहां पर दो कंडीशन है. आप कार चला रहे हैं, अगर पंचर हुआ तो आप टायर चेंज कर लेके घर पे चले जाएंगे. अगर टायर पंचर नहीं हुआ तब भी आप घर पे जाएंगे. ओके, घर पे जाके क्या करेंगे आप? आप सबसे पहले घर जाएंगे, हाथ मुंह धोएंगे. अंडरस्टूड? व्हाट यू विल डू? फाइनली यू वॉश योर फेस. ओके, व्हाट यू विल डू? यू विल वॉश योर फेस, हैंड्स एंड फेस. आ रही बात समझ में? ओके, दिस इज द एंटायर फ्लो. ओके, आप अपने दिमाग में इमेजिन करना स्टार्ट करो वट एवर आई एम ट्राइंग टू टेल. ओके, व्हाट इज द ट्राई कंडीशन? ट्राई में क्या करेंगे? आप अपनी कार लेंगे, यू स्टार्ट ड्राइविंग योर कार. ओके, समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंस. क्या हो जाएगा? टायर पंक्चर हो जाएगा. व्हाट यू विल डू? यू विल एक्सेप्ट दैट पंक्चर सिचुएशन एंड यू विल चेंज द टायर. अब क्या करेंगे? सबको गाड़ी में बताएंगे कि भाई सब लोग बैठे रहो कार में, पंक्चर हो गया है, आई विल चेंज द टायर. And you will go change the tire and you finally come to the home, wash your hands and face. आ रही बात समझ में? आप कार लेके निकले, रास्ते में पंचर हो गई, आपने टायर चेंज किया, घर गए, आपने हाथ मुंह धो करके घर में एंटर हो गए. अंडरस्टूड? You'll take the another case. You take your car, go driving. आपकी पूरी जर्नी में कहीं भी टायर पंक्चर नहीं हुआ, फिर भी आप घर आके हाथ मुंह धोएंगे ना? So that is finally.
अंडरस्टूड? ओके। आपकी कार पंचर हो या ना हो, आपके हाथ मुंह धोने से तो कोई लेना देना नहीं है। जब भी कोई घर में आएगा हाथ मुंह धो के ही आएगा। दैट इज फाइनली understood. You try to execute some code. If you get any exception, you will accept it and you will fix the error. Okay, or you will show some error message to the user. Else you will do when there is no error. Okay, अगर कुछ error नहीं आए, else you will proceed with the happy path. अगर नहीं error आया है, accept करेंगे, उसको error दिखाएंगे. अगर error नहीं आया, आप else part पे चले जाएंगे, you will execute that. Finally what you will do, you will complete the transaction. ठीक है, एरर आए या ना आए, you will go to the finally block. अरे बेटा बात समझ में? See, exactly note it down as it is in your notebook. Okay, जब भी आपको समझना है, try, accept, else and finally, you take this flow and try to example using this car example. That is the process of handling an exception. Got it guys? What is the process of handling an exception? समझ में आ गया? अब मैं क्या करूंगा, I will give you a programming example based on try, accept, else and finally. ठीक है, हमने तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख लिया. ओके, अगर क्वेश्चन पेपर में if they ask about process of handling an exception, you should say what are the process of handling an exception, what are the terms involved in this process, that is try, accept, else and finally. एक एग्जाम्पल ले लो, टेक द सेम एग्जाम्पल ऑफ कार गाइज, देयर इज नो हार्म. Theoretically example लिखो and you write a programming example. That's how you explain about handling and exceptions. Got it guys? Let's move ahead with the programming example. Okay, yeah, we will take the same ATM example guys. Before starting the example, if you understand and if you learn the example whatever I'm going to tell now thoroughly, this will also complete the remaining two concepts, that is catching exceptions, that is try, accept, else clause. अरे बेटा बात समझ में? and even the another topic, that is finally clause. ठीक है, ये सारी चीजें, because each and every topic is interrelated. Process of exception handling के अंदर we have try, accept, else and finally. Or if you see here, catching an exception, try, accept, else, and again here we have a finally clause. अरे बेटा बात समझ में? So whatever the programming example now I'm going to explain, if you learn that thoroughly, I guess we are at the end of the chapter. Understood? Okay, please pay attention. Okay, and also please note down this example. I will first have try. देखो बेटा, कीवर्ड डालते ही the color has changed, it means some of the correct syntax. Try colon, what you are going to try. Okay, आप क्या try करेंगे? I will try. Before that, what I will do is I will have something called as balance. Balance is equals to again 10,000. Okay, and I will try amount is equals to int of input. Okay, enter withdrawal amount. ठीक है, कितना विड्रॉ करना है अमाउंट उतना आप टाइप करो. नाउ आई विल सी if amount is greater than balance. ठीक है, if my amount is greater than balance, what I will do, I will raise a value error. Okay, with the statement telling that insufficient balance. अरे बेटा बात समझ में? Now what I will do after that, I will come back. ये मेरे को ट्राई करना है. इसके बाद कीवर्ड क्या था मेरे पास? What was the keyword? Accept. What you will accept? If there is an error, you will accept this error. Understood? Okay. Accept. What you are accepting? You are accepting the value error. That's the same thing I'll have. Value error as VE. ठीक है, v इज अ वेरिएबल. ओके, वैल्यू एरर ऐसे समझ लो, ये वैल्यू एरर का v, ये जो v है, ये v यहाँ पे आ गया एंड ये e यहाँ पे आ गया. वैल्यू एरर इज जस्ट एन वेरिएबल. ओके, अगेन आई हैव अ कोलन, एंटर. आई विल से प्रिंट
एरर, एरर प्रिंट करूंगा। क्या एरर है? व्हाट इज द एरर? एरर इज वीई। ओके, ऐसे समझो ये जब आप ट्राई कर रहे हैं इसके अंदर कुछ तो एक्सेप्शन आया। क्या एक्सेप्शन आया? वैल्यू एरर। ये वैल्यू एरर यहाँ पे आप एक्सेप्ट करेंगे, आई मीन यू आर कंज्यूमिंग द वैल्यू एरर एज वी, मतलब इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं आप। ओके, व्हाट इज इट स्टोर्ड? ये जो मैसेज है ना, ये जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स है ना, ये आर्ग्यूमेंट्स इसके अंदर स्टोर होंगे वीई के अंदर। आ रही बात समझ में? यू विल प्रिंट दैट एरर वीई। अरे बेटा बात समझ में? दैट इज ऑल इन एक्सेप्ट। नाउ व्हाट आई विल डू एल्स? अगर मान लो एरर नहीं आया, इन दैट केस व्हाट यू विल डू? यू विल जस्ट प्रिंट द सक्सेस स्टेटमेंट, दैट इज withdrawal, withdrawal successful, withdrawal is successful and amount, amount withdrawn, अमाउंट विथड्रॉन, कितना अमाउंट आपने विथड्रॉ किया उतना लिख दो भाई। व्हाट इज अमाउंट विथड्रॉन? AMOUNT, अमाउंट। ठीक है, ओके, आई विल एक्सप्लेन यू गाइस, डोंट वरी। फाइनली, ओके, एरर आए या ना आए, फाइनली यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस। ओके, फाइनली, फाइनली print transaction completed. Okay, take your card. इतना ही होता है ना भाई? This is the entire program using try, accept, else and finally. ठीक है भाई, ये वाला example is perfect if they ask you any question related to the process of handling, related to catching exceptions, related to try, accept, else or related to the finally clause. You can write the same example. Okay, buy one get 4 और 5 फ्री। ओके, एक टॉपिक, 2, 3 एंड 4, बाई 1 गेट 4 फ्री। ओके, एक एग्जांपल सीख लो, 4 कॉन्सेप्ट्स फ्री। ओके, सो लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस प्रोग्राम। मेरे पास बैलेंस कितना है? आई हैव द बैलेंस ऑफ 10,000। ओके, एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू विथड्रॉ सम अमाउंट। ओके, विथड्रॉ करते समय अगर अमाउंट बराबर से मैंने डाला तो वो क्या करेगा? इट विल जस्ट प्रिंट विथड्रॉवल सक्सेसफुल, अमाउंट विथड्रॉन। ओके, अगर एरर आया तो क्या करेगा? इट विल एक्सेप्ट अ वैल्यू एरर एंड इट विल प्रिंट एरर वी। व्हाट इज वी? वी इज इनसफिशिएंट एरर। ये जो वैल्यू एरर है ना, ये हम कंज्यूम कर रहे हैं एज वी, और ये वाला वी मैं यहां पे प्रिंट कर रहा हूं। दैट्स हाउ इट इज। ओके, एंड फाइनली आपके प्रोग्राम में एरर हो या ना हो, इट विल से ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड, टेक योर कार्ड। ओके, अब मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेके आपको थियोरेटिकली समझाता हूं। यू गो टू द एटीएम, यू ट्राई टू विड्रॉ सम अमाउंट। ओके, अगर अमाउंट आप विड्रॉ किए, मान लो आपके अकाउंट में 10,000 है, यू ट्राई टू विड्रॉ 5,000। ओके, इट विल गिव यू द अमाउंट एंड इट विल ऑल्सो से ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड, टेक योर कार्ड। ठीक है, अगर मान लो आपके अकाउंट में 10,000 है एंड यू ट्राई टू विड्रॉ 20,000, in that case what happens? It will give you an error saying that insufficient balance, then again it will say transaction completed, take your card. Okay, आपको पैसा मिले या ना मिले, ये स्टेटमेंट आपको दिखेगा ही दिखेगा, that is transaction completed, take your card. Okay, finally ये एग्जीक्यूट होना ही है, that is called as finally. else, अगर एरर नहीं आया तो else केस में ये आएगा, अगर एरर आया तो ये वाला प्रिंट होगा। That's all, and you are trying this one. Understood? Your program is divided into 4 blocks. Let's save it and try to run this one. Chalo. Okay, I'll try to run. I'll just close this and try to run one more time because I'll have a good space here. Try to run. Very good. Now I have a very big space here. What is the amount I have in my account? That is 10,000. I will try to withdraw only 2,000. Okay, let's try to withdraw 2,000. Hit enter. It will say withdrawal successful, amount withdrawn is 2,000. समझ में आ गया? देन उसके बाद क्या बोल रहा है? ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड, टेक योर कार्ड। ठीक है, अमाउंट विड्रॉ हो गया है एंड द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड एंड यू कैन टेक योर कार्ड बैक। नाउ लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट इट वन मोर टाइम विद अनदर केस वेयर वी ट्राई टू विड्रॉ द अमाउंट लार्जर दैन व्हाट आई हैव इन माय अकाउंट। अभी मेरे अकाउंट में 10,000 है, आई विल ट्राई टू विड्रॉ 20,000।
I will hit enter. What it is telling, instead of my program crashing, यहाँ पे कहीं भी आपको रेड कलर नहीं दिख रहा है, मेरा प्रोग्राम क्रैश नहीं हो रहा है, इंस्टेड आई एम हैंडलिंग द एक्सेप्शन, मैं सिचुएशन को हैंडल कर रहा हूं. कैसे हैंडल कर रहा हूं? इट इज सेइंग एरर insufficient balance and it is telling transaction completed, take your card. Understood? समझ में आया बेटा? Why this try except else and finally block is needed? ओके अगर आप एक्सेप्ट फाइनली कुछ भी यूज नहीं करेंगे आपका एटीएम क्रैश हो जाएगा. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट योर एटीएम फ्रॉम क्रैशिंग एंड गिव द मीनिंगफुल एरर मैसेजेस टू द यूजर, वी मेक यूज ऑफ ट्राई एक्सेप्ट एल्स एंड फाइनली क्लॉज. अंडरस्टूड बेटा? ओके सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर. You will tell how, bhai kaise? Still we have the topics left out. We have already completed catching the exceptions. Where you have completed the catching exceptions, I will tell. Okay, I will draw an arrow mark. Okay, catching an exception is this one, else part. आ रही बात समझ में? Okay, process of exception handling के अंदर, I'll just zoom out. Process of exception handling के अंदर we have the 4 process, that is try, accept, else and finally. But when it comes to the catching and exceptions, how you catch the exception? You catch it using the except. Except से आप क्या करेंगे? Exception को catch करेंगे. Then what is the next one we have? What is the next one we have? The next one we have is try, accept, else. यहाँ पे try हो गया, यहाँ पे accept हो गया, यहाँ पे else हो गया. Understood? Okay. Let me just draw something. Okay. Try accept else हो गया, try accept else भी हो गया. Now coming to the finally, यहां पर है मेरा finally clause भी खत्म हो गया. Okay, that's what I was trying to tell you guys. Okay, by one एक चीज अच्छे से पढ़ लो, try accept else and finally, that covers catching an exception, try accept else clause and the finally clause. This completes your first chapter, that is exception handling in Python. Guys, please note down this program. This program covers all the 4 topics, guys. That's all about your first chapter. Okay, if you have any issues, if you face any difficulties, or if you need any definitions, or if you need any some things extra from your textbook, please reach me out in the WhatsApp group what we have. Guys, hope this answers your first chapter. Jazakallah khair. Barakallahu feekum. Assalamu alaikum.